चलो भाई, केमिकल बॉन्डिंग is same as that we studied in O level or IGCSE, but of course we will go into much further depth in the concepts. Chemical bonding में first of all, why do atoms of different element they need to make a chemical bond? Because they need to achieve stability, and there are different ways of forming a chemical bond. Some atoms achieve stability by losing electrons, some atoms achieve stability by gaining electrons, and atoms of some element they achieve stability by sharing of electrons. On the basis of these modes of achieving stability, atoms of same elements and atoms of different elements they make a bond with each other. And on the basis of that, we used to study three types of bonding: ionic bonding, covalent bonding, and metallic bonding. Right? So first we will recall the ionic bonding from O level. Ionic bonding was used to the due to the transfer of electrons and formation of oppositely charged ions which are attracted to each other by electrostatic force of attraction. The definition of ionic bonding is similar as that we studied in our grade 11. सब कुछ वैसा ही है. ठीक है, हम लोग मैं बस एक क्वेश्चन ये लिख के आपके लिए छोड़ रहा हूँ. Why atoms form a bond, then how atoms form a bond, and type of bondings. So right now we are starting from the first type of bonding, that is ionic bonding. And as you know, ionic bonding takes place between the metals and non-metals. If any atom of metallic elements, they lose electron to achieve stability and they form positively charged ions. Whereas the atoms of non-metals, they gain those electrons and they get negatively charged ion. And as per law of charges, we know that oppositely charged ions are always attracted to each other by a force of attraction. But that force of attraction is specifically known as electrostatic force of attraction. So when these oppositely charged ions are attracted to each other by electrostatic force of attraction, they form a bond with each other, and such a bond is known as ionic bond. Remember? याद आ गई सबको? अच्छा, then we used to make the dot and cross diagrams for ionic bonding. Dot and cross diagram में हम लोग we used to consider one molecule of an ionic compound. Like if I asked you to make a dot and cross diagram of a sodium chloride, आप उसमें you have to make a sodium ion and then chloride ion और उसके बीच में force of attraction show करते हो. इसी तरह यहाँ पर भी क्या आपसे डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनवाई जा सकती हैं ए लेवल में? यस ऑफ कोर्स बेटा, बनवाई जा सकती हैं और बनवाते हैं, बट यूजुअली ये क्वेश्चन कम आता है लेकिन आता जरूर है. तो आपको क्या वो ओ लेवल की या आईजीसीएसई में जो आप लोगों ने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स पढ़ी थी वो सारी रिकॉल करनी है? बिल्कुल करनी, सारी करनी. ठीक है, मैं आपको जरा इसको एक ओवरव्यू दे देता हूँ जो हमने पहले पढ़ी होती है डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स आयनिक कंपाउंड्स की. Ionic bonding takes place between the elements of metals and non-metals. Previously, we used to say that metals are from all of these groups from group 1 till group 3. But आपको पता है कि अब A level में हमारे पास ग्रुप नंबर चेंज हो गए. अब ग्रुप नंबर हमारे पास 1 से 3 नहीं कहेंगे, हम इसको 1 से 13 कहेंगे. All the elements in between group 1 till group 13. And of course, we still have metals from group 14 as well, which is tin and lead. And in fact, we have some metals from group 15 as well. That's like bismuth. Bismuth is a group 15 element, but it acts as a metal. And if any of these elements from these group, they make a bond with any of the elements from group 15, group 16, or group 17, then such a bond formed is known as ionic bond. For example, if we consider a sodium atom, it has one valence electron. A chlorine atom has 7 valence electron. So sodium needs bismuth, bismuth, या bismuth, Umar, not biscuit.
ठीक है, a sodium atom loses one electron from its valence shell to achieve stability and it forms a positively charged ion. A chlorine atom gains that one valence electron in its valence shell to form a negatively charged ion, which is a chloride ion. And as these two are oppositely charged ions, these are attracted by electrostatic forces of attraction. You should know how to make a dot and cross diagram for the ionic compound sodium chloride. Sodium, after losing an electron, sodium ion is left with two shells only. So if you are asked to draw the complete shells, you have to make these two shells and you have to put a charge over it. You just add brackets on the left and right hand side of this sodium ion, and then you have to write a charge as well. And for a chlorine atom, when it gains one electron, so its number of shells stays same, but it gains one electron from the sodium atom. So you have to draw one of the electron of its outer shell by a dot to signify that it has come from the sodium atom, right? So, and the chlorine atom gets a negatively charged ion, and these two ions are then attracted to each other by electrostatic force of attraction. Okay, electrostatic force of attraction is the force of attraction due to charges. And you guys know the law of charges as well. And of course, you should know how to make a formula of an ionic compound. If you do not know the how to make a formula of an ionic compound, तो आगे dot and cross diagram बना ही नहीं सकते हो. ठीक है, magnesium oxide, how do you make the formula of an ionic compound? We know magnesium is from group 2 and oxide comes from oxygen, which is from group 16, right? So oxygen makes a charge of 2 negative and magnesium makes a charge of positive 2. And we have to then further simplify these two numbers. 2 और 2 को 2 से divide करेंगे, we will get one with magnesium ion and one with oxide ion. So the one written over oxide ion go under the subscript of magnesium and one written over magnesium ion will go under the subscript of oxygen. That's how you used to make the formula of an ionic compound. I hope you guys remember. If you guys think that you do not still or you have forgotten how to make the formula of an ionic compound, अभी हम थोड़ा सा रिवाइव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भूल जाओ तो बेटा मुझे बता देना, मैं उसका बल्कि मैं बता क्या देना, मैं उसका लेक्चर भी ना अपलोड कर देता हूँ, रिवाइज कर लेना, ठीक है, साथ ही कर दूंगा बॉन्डिंग के. ठीक है, how would you make the dot and cross diagram of magnesium oxide? You know that its electronic configuration for a magnesium atom is 2, 8, 2. We are writing this, just we are showing the number of electrons in a shell. सब shells की बात नहीं कर रहे हैं अभी. So magnesium atom, when it loses 2 electron, it gets a charge of 2 positive and it has 2 electron from its valence shell. When it loses those 2 electrons, now its third shell is no more. So now magnesium ion is left with 2 shells only. Similarly, oxygen atom gains these 2 electrons in its valence shell. So its valence shell, we have to show 2 electrons with a dot to signify that these 2 electrons have come from the magnesium atom. And the overall charge over the oxide ion would be 2 negative. So can you guys make the dot and cross diagram as your homework? मैं इसको आपको बनाने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, बट क्या ये ए लेवल में आती हैं? हाँ बेटा, आ जाती है बनाने के लिए. आयनिक बॉन्डिंग की फुल मार्क्स के लिए डेफिनेशन क्या होगी, अभी लिखवा देता हूँ. How do you make the dot and cross diagram for magnesium chloride? That's how you will make the dot and cross diagram for magnesium chloride. ठीक है, बहुत गंदी सी बनी हुई है, but I hope you guys have an idea how to make a dot and cross diagram of an ionic compound. And in magnesium chloride, the formula for magnesium chloride is MgCl2, which shows that one magnesium ion has been combined with two chloride ion. So how would you show this on the dot and cross diagram? With magnesium, nothing is written. It means by default it is 1. But with the chloride ion, we have written 2 before the chloride ion. It means we have 2 chloride ions combined with 1 magnesium ion. We can alternatively, we can also make this dot and cross diagram like this. We can draw only 1 magnesium ion showing its outermost electron, outer shell only, with a charge of 2 positive over it. And we can draw 2 chloride ions side by side with this magnesium ion. But this is not always a good idea because if you have to draw 3 anions, like in aluminum oxide, we have 2 aluminum ion and 3 oxide ion. Then क्या आप 2 aluminum ion और 3 oxide ion अलग अलग बनाओगे? ना आपके पास इतना टाइम होगा, ना आपके पास इतना स्पेस होगा. So what we usually do is we just write the number before the ion. If magnesium chloride has 2 chloride ion, we will write just 2 before it. It shows that we have 2 same chloride ions attracted to this magnesium ions. You can draw it with a pen, you can draw it with a pencil, it's up to you. But whenever he says draw anything, then you are allowed to use the pencil.
Arich, it's up to you because whenever he uses the word draw, if he uses the word draw, then you are allowed to use the pencil. But as far as your AS level is concerned, it won't matter much. Uh, it is as advisable to always use the pen. But if he just uses the word draw, then only you can use the pencil. Otherwise, you will have to make it with pen. एक मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं क्लोरीन के साथ का मतलब का MgCl नहीं, बलराज देखो, क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मैग्नीशियम कहता है मैं दो लूज करूंगा, अब क्लोरीन कहता है आई कैन जस्ट गेन वन इलेक्ट्रॉन, नो मोर देन दैट, सो इट मींस वी मस्ट हैव टू क्लोरीन एटम्स, ईच ऑफ विच विल गेन वन इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम ने तो अभी भी टू लूज करे बट ईच क्लोरीन एटम विल गेन वन इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई फॉर वन मैग्नीशियम आयन वी हैव टू क्लोराइड आयन, तभी तो दो क्लोराइड आयन को आना पड़ा, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम तो दो लूज कर रहा है। अब नाउ इफ ईच मैग्नीशियम एटम इज लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, so it means one of the electron will go to one chlorine atom, the other chlorine electron will go to the other chlorine atom, that's why we have two chloride ion in the end for one magnesium ion. Got it? बीच में प्लस का निशान आएगा, बिल्कुल लगा सकते हैं आप, ना भी लगाना चाहे ना लगाएं कोई मसला नहीं है, अगर आप बीच में इन ऑर्डर टू शो दिस अट्रैक्शन आप इसको ना भी लगाना चाहें दिस पॉजिटिव, दैट्स ओके. Most of the students get confused that this positive 2 is already written over here, then why to write this positive 2 over here? This is not a positive 2, this shows that we have two chloride ion, and this positive signifies that this magnesium ion and chloride ion are attracted to each other, ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे स्टार्ट थिंकिंग ये पॉजिटिव टू ऊपर जो लिखा था वो नीचे लिख दिया है, इसलिए मैंने पॉजिटिव लगाना ही छोड़ दिया है, समझ आई बात. तो एक्चुअली इसके मार्क्स भी नहीं कटने अगर आप यहाँ पे, हाँ ऊपर अगर आपने पॉजिटिव नहीं लिखा तो इसके मार्क्स कट जाएंगे. एंड सम ऑफ बैक इन ओ लेवल इट हैपेंस, नॉट इन एएस लेवल. अब आप इतने बड़े हो गए उतने समझते हो, अगर मैं यहाँ पॉजिटिव टू लिख दूं तो कहते लिख तो दिया पॉजिटिव टू, ऊपर लिखने की क्या जरूरत है, ये नहीं करना प्लीज. ठीक है भाई. So someone was asking me the definition of ionic bonding. So how do you define an ionic bond? It is a bond formed due to transfer of electrons and formation of oppositely charged ions attracted to each other by electrostatic force of attraction. नीचे ना लिखो, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है. And we know ionic bonding takes place between metals and non-metals. So all the elements from group 1 till group 13, when they make a bond with any of the element from group 15 to group 17, then such a bond formed is known as ionic bond. ठीक हो गया भाई. So this is, अभी ये जो मैं अपलोड करूंगा तो ऑब्वियसली आई विल रिमूव ऑल ऑफ दीज पेजेस जो कि मैंने अभी ओ लेवल से उठाए, बट फ्रॉम ए लेवल में अब कहाँ से काम स्टार्ट होता है आपका, आपका काम स्टार्ट होता है इन ए लेवल ही इज मोर इंटरेस्टेड इनटू द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, especially the physical properties. देखो बेटा, chemical properties are related to the chemical reactions, and chemical reactions आपने already आगे पढ़ने हैं, how ionic compounds react, how they dissolve into water, those are all your chemical reactions. वो तो आप पूरे throughout the course of study till A2 यही पढ़ते रहोगे. But for physical properties of ionic compounds, we will be studying physical properties only in this section, और फिर उसके आगे कभी भी नहीं पढ़ेंगे उसको. So what are the physical properties of ionic compounds? We used to study that ionic compounds. Before studying physical property, you have to understand the structure of an ionic compound. Ionic compound has a giant ionic lattice, right? We do not have only one cation or one anion attracted to each other. For example, if we have a cation, a positively charged ion, we have anion next to it. मतलब कैटाइन के राइट पे एनाइन होगा, लेफ्ट पे एनाइन होगा, आगे होगा, पीछे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा. So one cation is surrounded by anion from all these six sides. Similarly, one anion is also surrounded by a cation from all these six sides. So if you see the ionic lattice, here we have oppositely charged ions regularly arranged in the form of giant ionic lattice. And whenever you hear the word lattice, it means the regular arrangement. The word lattice actually tells you the regular arrangement of something. If the oppositely charged ions are regularly arranged, then it forms a ionic lattice. If you see this lattice, you can see we have sodium ions and chloride ions alternatively arranged with each other. We have a sodium ion, chloride ion, मतलब पॉजिटिव के आगे पॉजिटिव, पॉजिटिव के नीचे पॉजिटिव, पॉजिटिव के पीछे पॉजिटिव, पॉजिटिव के राइट पे पॉजिटिव, पॉजिटिव के लेफ्ट पे पॉजिटिव. उल्टा कह रहा हूँ,
पॉजिटिव के राइट लेफ्ट आगे पीछे ऊपर नीचे सब नेगेटिव होगा, नेगेटिव के राइट लेफ्ट आगे पीछे सब पॉजिटिव होगा। ठीक है। स्पेसिफिकली इफ यू सी दी आयनिक लैटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो बीच में देख रहे हो सोडियम बनाया हुआ है छोटा सा, उसके पीछे भी हैव क्लोराइड आयन, आगे भी हैव क्लोराइड आयन, ऊपर भी हैव क्लोराइड आयन, नीचे भी हैव क्लोराइड आयन, राइट पे भी हैव क्लोराइड आयन, लेफ्ट पे भी हैव क्लोराइड आयन। तो पॉजिटिव के आगे पीछे ऊपर नीचे सब नेगेटिव है, इसी तरह नेगेटिव के भी आगे पीछे ऊपर नीचे सब पॉजिटिव ही होगा, तो एक बड़ा सा नेटवर्क बन जाता है। गॉट इट। अच्छा जी, अब ionic compound, seeing the structure of an ionic compound, you should know the physical properties of ionic compound. As I previously, we used to have this concept of coordination number in our syllabus. अब नहीं है वो. Basically, sodium chloride, we can say that each sodium ion is surrounded by 6 chloride ion, and each chloride ion is also surrounded by 6 sodium ion. So, ये जो number of cations and anions which are directly attached or attracted to a cation, तो कितने कैटाइन कितने एनाइन के साथ अटैच्ड है और कितने एनाइन कितने कैटाइन के साथ अटैच्ड है, इसको हम कहते थे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नाउ वी डू नॉट हैव दिस टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर इन आवर एएस लेवल, बट फॉर सोडियम क्लोराइड द कोऑर्डिनेशन नंबर यूज्ड टू बी 6। एक एमसीक्यू शायद आपको पुराने उसमें दिख जाए, बट नाउ यू आर नॉट सपोज टू रिमेम्बर दिस। एंड डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, सबका एक जैसा नहीं होता, बट हमें उस डिटेल में नहीं जाना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल इन नेचर। यू गाइस नो व्हाट ब्रिटल इज? रिमेंबर मेटल्स वर malleable and ductile. Malleability and ductility is ability of metals to be hammered into different shapes or ability of metals to be stretched into wires. Means metals, pure metals can change their shape easily without breaking. However, if anything is a brittle, it means, for example, glass. If you apply a force on a glass, glass won't bend itself. It will break or cracks right away. Similarly, ionic compounds are also brittle in nature. If you see the wall in front of you, the wall is made up of an ionic compound. जो कि calcium carbonate या cement जो है हमारा, that is an ionic compound. If you apply the force on the wall, the wall won't bend, but it will break. अगर break होगी तो वो direct crack करेगी. You can even just try to just pick a crystal of salt and try to just apply a force with your thumbnail over it. So the crystal जो है ना वो bend नहीं होगा, it will just scatter, मतलब बीच से crack करेगा. And why it happens? See, we have a layer of oppositely charged ions on the top. If we apply the force on one of the layers, अगर मैं top वाली layer पे force apply करता हूँ, so this layer will move forward, but the layer at the bottom will stay in its place. देखो पहले पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर नीचे है, राइट, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, लेकिन जैसे ही मैं इस लेयर को आगे स्लाइड करूंगा, what will happen? The positive will come in front of positive and the negative will come in front of negative. So now जब पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव के ऊपर आ जाएगा, सो दिस कंप्लीट लेयर विल रिपेल ईच अदर, और रिपेल हो के अलग अलग हो जाएंगे, तो वो बैंड होने का मौका ही नहीं मिला उनको, डायरेक्ट टूटेंगे। सही है। The second property of ionic compound that was important was ionic compounds have very high melting and boiling points. Why they have very high melting and boiling points? Again, they ask you this question in AS level for 2 marks, because ionic compounds have a giant ionic lattice. So huge amount of energy is required to break many strong electrostatic forces of attraction. What are the electrostatic forces of attraction? अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में जो फोर्सेस है, जिनको हम आयनिक बॉन्ड्स भी कह सकते हैं, राइट। तो ये वाला आंसर भी आपको याद होना चाहिए। ब्रिटल इन नेचर, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड वाज दैट आयनिक कंपाउंड्स do not conduct electricity in solid state because the ions are fixed in the solid state. However, ionic compounds can conduct electricity in molten as well as in aqueous state. ये चीजें याद है। इलेक्ट्रिसिटी इन केमिस्ट्री कैन ओनली हैपन ड्यू टू free electrons or free ions. Do you guys remember which substances can conduct electricity due to the presence of free electrons, and what are those substances that can conduct electricity due to the presence of free ions? थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं या याद है, या मैं पूछना स्टार्ट करूं, जवाब दोगे? अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इलेक्ट्रिसिटी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म करके क्लास खत्म करेंगे?
अच्छा भाई, इलेक्ट्रिसिटी is the flow of charges, and we can have two types of particles that are responsible for conducting electricity in any substance. It can be free electrons or free ions, right? Just free electrons or free ions. What are the substances that conducts electricity due to the presence of free electrons? Rahmin, please. Listen. Metals can conduct electricity due to the presence of free electron. And what is an other substance that can conduct electricity due to the presence of free electrons? There is only one non-matter that can conduct electricity due to the presence of free electron, and that is graphite. Because in graphite, each carbon atom has one free electron. Remember, carbon in graphite makes only 3 covalent bonds. So one of the electron to each carbon is free. And which substances can conduct electricity due to the presence of free ions? Which substances have ions in them? Ionic compounds. But does ionic compounds conduct electricity in all of their states? Ionic compounds के पास ions हैं, but क्या solid state में are ions free to move? Does ionic compound conduct electricity in solid state? No, does not conduct electricity in solid state. The reason, because ions are not free to move, or ions are fixed, right? But ionic compound does conduct electricity in liquid state. Liquid state is also known as molten state. Means when you melt an ionic compound, that state is known as liquid state or molten state. Yes, ionic compounds conduct electricity in molten or liquid state. Why? Because now ions have become free to move. Because once you have melted the ionic compound, ionic bonds are broken and now the ions are free to move. What about the aqueous state of ionic compound? Are all ionic compounds water soluble? Aqueous state is when anything dissolves into water, right? So are all ionic compound dissolve into water? सबके सब dissolve होते हैं क्या? नहीं ना? कुछ सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं, कुछ नहीं होते. तो डिसॉल्व हो जाते हैं, दे हैव फ्री आयंस एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. What about covalent? देखो, on the basis of metallic bonding, we know metals all conduct electricity in solid state as well as in molten state because they have free electrons. Graphite is an exception, इसलिए अलग ही बता दिया उसको. आयंस की वजह से आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. What about covalent molecule? Does covalent molecule have free ions or ions in first place? Covalent molecule does not have ions. When they share electrons, they do not form ions. मोल्टेन और एक्वस में फर्क क्या है? मोल्टेन इज दी मोल्ट. अगर मेरे पास सॉल्ट है ना, उसको मैं हीट करके मेल्ट कर दूं, लिक्विड सॉल्ट बना दूं, डेट इज दी मोल्टेन सॉल्ट. लेकिन अगर मैं सॉल्ट को पानी में डाल के डिसॉल्व कर दूं, डेट इज दी एक्वस सॉल्ट. अहमद, रामीन, कार्बन कंडक्ट नहीं करता. कार्बन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म होती है. कार्बन कैन एग्जिस्ट एज अ डायमंड एज वेल एज अ ग्रेफाइट. तो कार्बन when it is present in graphite it conducts electricity. ये हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, हमने ओ में भी पढ़ा था, हम स्टेट्स ऑफ मैटर में फिर पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी. अच्छा, what about covalent molecule? Does covalent molecule conducts electricity in any form? Are there any covalent molecules or simple covalent molecule? देखो, there is one giant covalent molecule that will conduct electricity due to the presence of free electrons, and that is graphite. ये तो बता दिया हमने. Is there any other covalent molecule that can conduct electricity in any of these states? Ice है, water है. Water is a covalent molecule. ठीक है, simple covalent molecule है. Solid state ice है, liquid state water है और gaseous state steam है. Can it conduct electricity in any of these states? No. The answer is no. Right? Water does not conduct electricity because it is a simple covalent molecule. It does not have any free ions or free electrons. ठीक है? Okay.
Yes, there are no free ions in water. There are no free electrons in water. Balraj, what are you thinking? If you are thinking that we have इन आपने सुना है वाटर से इलेक्ट्रोक्यूशन होता है तो बेटा दैट इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट हैपन ड्यू टू वाटर। वो वाटर में जब सॉल्ट मिक्स होता है ना, मिनरल्स मिक्स होते हैं तो वो फ्री आइंस होते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इफ यू टेक प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर, 100% जस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स, दिस विल नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंडली, मैं आपसे पूछ रहा था क्या कोई ऐसे सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? हैं। कौन से हैं भाई? एसिड्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में डालोगे इट विल गिव आइंस, राइट? तो एसिड इन एक्वा स्टेट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो इफ एनीथिंग इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस, एसिड्स भी होते हैं उनमें। एसिड्स which are simple covalent molecule. Not all simple covalent molecule dissolve into water to give ions, but acids they do dissolve into water to give ions. ठीक है, चाहे वो मिनरल एसिड हो चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो। ठीक है भाई, दिस वाज द कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी चार्ट दैट वी डिस्कस्ड इन ग्रेड 11। यहाँ भी ऐसा ही है, कुछ चेंज नहीं है उसमें। So ionic compounds, they conduct electricity in molten as well as in liquid state and in aqua state, ठीक है, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। तो आयनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज यही थी, बेसिकली हमने रिकॉल किए। अच्छा, बिफोर नेक्स्ट क्लास मेक श्योर यू रिकॉल ऑल द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स ऑफ अ कोवलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट कोवलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग इतना ही है बेटा सिलेबस में। ज्यादा में ज्यादा ही विल आस्क यू अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट और द कंपैरिजन ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स। तो वो क्वेश्चंस के साथ हम कर लेंगे, वैसे वो भी पढ़ा हुआ है आपने। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई विच ऑफ दीज आयनिक कंपाउंड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड मस्ट हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं। किस तरह से? भाई देखो, जिस आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट किसका होगा? जिसमें चार्जेस हायर होंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में वी हैव एल्यूमिनियम आयन विद अ चार्ज ऑफ 3 पॉजिटिव और ऑक्साइड आयन में वी हैव अ ऑक्साइड आयन विद अ चार्ज ऑफ 2 नेगेटिव। मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg+2 होता है, ऑक्साइड में 2 नेगेटिव, सोडियम में +1, क्लोराइड -1। तो बेसिकली यू जस्ट हैव टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस, मतलब फॉरगेट अबाउट द साइन। जो इनके नंबर्स है ना, इनके बीच में से प्रोडक्ट ले लो। 3 2s are would become 6, 2 2s are would become 4 and 1 1s are would become 1. So the product of these two charges is highest in aluminum oxide. It means aluminum oxide has the strongest electrostatic force of attraction, the strongest ionic bond. So in order to change the state of an ionic compound, you directly have to break the ionic bond. So aluminum oxide must have the highest melting point of all of these three ionic compounds. Got it? And which one of these ionic compounds have the lowest melting point? Which have the weakest ionic bond? And the weakest ionic bond among these three ionic compound is the of sodium chloride because it has lowest charges. ठीक है, तो it must have lowest melting point. Got it? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं करते आयनिक कंपाउंड की। वी विल नेवर हैव टू बॉयल एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाईएस्ट ही होगा। ठीक है भाई, सो फार सो गुड। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज यू गाइस may leave, but make sure before next class revise the dot and cross diagrams of all the covalent molecules that you have studied in O level. I am also attaching those files with you कि जिसमें डॉट एंड क्रॉस थी ना कोवलेंट की ओ लेवल वाली, मैं इसी में अटैच करके दे दूंगा, चाहो तो यहीं से खोल के रिवाइज कर लेना, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है।